Good evening, everyone. If you don't heal the wounds of your childhood, you will bleed in your future. Welcome back to the second season of Voice Out, Speak Up to Reach Out. I am Bonita Fernandes, the founder of Being Beautiful, and Voice Out is a platform where you can express to inspire. Well, the fifth color of the rainbow is blue, and blue also stands for peace, and peace leads to healing. So today we are going to speak about healing. So now it's time for me to introduce my fifth speaker or voice out, Sameel Shaikh. Well, Samir has completed his graduation from Goa University. He works in social sector more than 10 years, which involves child rights, women empowerment, health, and livelihood. Since he has come from a wounded childhood, he decided to help the children for the same reason. So, Samir, welcome to Voice Out. Thank you, Bonita. Thank you. Samir, I must say that the when we met, it was through an online class that we both were attending at that time. We both were attending drama therapy, and that's where I came across you. And when we were in some kind of exercise, I remember you told me that you are taking care of juveniles where you're dealing with something like this. So I was really amazed with the way you spoke that day because not many people are comfortable speaking about what you're going to speak today. So, Yes. Samir, why do you think it's important, or why did you agree to voice out? So, thank you, Bonita, for my introduction, and hello, everyone. Uh, for me, this is a platform where I can share my experience with everyone. So, if someone came across any situation, so they can go, so they can relate, or they can get any, उनको एक रास्ता मिल जाएगा, like that. So I choose to be a part of this platform and express my opinion, my view, and share my experience. Yeah, Bonita. So, I mean, how comfortable are you speaking about something which has been so close to your heart? And well, I know a little bit about what you're going to speak, but yes, of course, the viewers wouldn't know what you're going to speak. So, how comfortable, or did you have to convince yourself to come on this show and speak? Because there are a lot of people who are going to watch this. Yeah, actually, when you asked me about this, like whether so you are planning to do a such session, so that time I was realized that, and I said yes to you, like I will be part of that session. Then I realized that is I'm really going to say about my life, or about my personal experience, or do I have that courage to express my view in front of many people? Yeah. So, Bonita, I also believe in values where my one of value is courage. That value helped me to be a part of this session, and definitely I will express my experience, my views. That will help myself. So That will much. help. Thank you so much, Samir, for accepting. When I asked you to, because it definitely takes a lot of courage to speak on something like this. So you have been following my blog, Being Beautiful. What is beautiful according to you? According to me, beautiful is like innocent and honest. Okay. If like, and for me is like beautiful is like love yourself. For me, myself, or for me, मैं खुद के लिए beautiful हूँ. So like I would like to share one line like, loving yourself more is the best place to start to solve any problem. That means अगर मैं खुद को प्यार करूंगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जो भी रास्ते पे आएंगे. So that's mean beautiful for me, Bonita. Correct. If you're talking about self-love, is what you meant. If you do not love yourself enough, there is nobody in this world who can love you. If at all you yourself hate the way you are, if you keep criticizing yourself, maybe physically also the way you look, if at all you're thin, you're fat,
you're not good looking or anything like that, then I don't think there is anybody made in this world to love you just the way you are. You need to first accept yourself. You need to first be there for yourself. Then the rest of the world is going to be there. So I completely resonate with what you said. And yeah, I think that is what is being beautiful also about. So, can you tell me a little bit about why your childhood was wounded? Okay. So, first of all, I would like to tell, like, I'm from Goa. My dad is from North India, and my mom is from Goa, and so it's like middle class family, जहाँ पे मेरे parents, my dad used to work as a laborer, and my mom used to like she was working used to sell fish that in Okay. Goa it is, yeah. So मेरी माँ के साथ भी मैं मच्छी बेचने जाता था, Okay. and I also used to work in hotel where I used to चाय देना and everything मैं करता था. Okay. So at that time I didn't realize कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है. Then suddenly in Goa, like rights, communal rights, दंगा हुआ था गोवा में. So that time I realized कि ये अचानक क्या हुआ है मेरे लाइफ में, because suddenly everything changed in Goa, and in the history of Goa it is the first time where And communal rights. when did this happen in Goa? Because I'm from Goa as well, so I'm not. Yeah, in 2006. In Oh, 2000. okay. Okay. No, I'm It is the first time in not about Goa where riots were happening in Savadem area. So I belong to that area, Savadem, Kurucharam. So that time I realized that suddenly everything is changed in my life. Like my friends, where we used to like play with each other, my neighbors, and everything like changed. And फिर हम वहाँ से शिफ्ट हो गए, चले गए. एंड उसके बाद child helpline, that is one child helpline is one of the helpline Goa. which helps distressed children or children in need of care and protection. They helped me to rehabilitate myself. Like I was in trauma, like ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. So that time they helped me in my education. I completed my education. After that I have completed my graduation, and then I realized that I should work for the children who are in distress, who are in need of care and protection. And I had joined my the child helpline in Goa, and where I worked 5 years in Goa Childline in Margao, where I used to work for the children who are like physical child abuse. I used to deal many cases like child abuse, runaway children, children who are drop out from the school, children who are trapped under trafficking. Many cases I deal with through Goa Childline, and which सो मेरे लिए ये था कि मैं भी ऐसे ही एक बच्चा था जहाँ पे मुझे हेल्प की जरूरत थी. सो दैट टाइम गोवा चाइल्डलाइन हेल्प मी. सो डेफिनेटली माय so I started thinking about I should help other people, other children, other kids. So I started like, yes. So what exactly happened with you that you had to reach out to the child helpline? Like, like what? So yeah, so I dropped from school. I was like मैं school नहीं जा रहा था. There is a fear in my mind, in our family also कि कैसे करे, क्या करे, because माहौल बहुत खराब है. So outside the situation is not that much good for myself. So that time I was like under trauma, including my family, कि क्या करना है, and I was stopped like my school. I didn't able to give my 10th exam because I still remember in 2006 I was about to give my board exams. So I failed in that exam because of that trauma, because of the tension. I didn't get time to study and all everything. So that time the childline counseled me. They helped me to to try और एक एग्जाम देने के लिए. Then that the time I realized that they are really doing good thing for me, as well as like for me
Childline is a platform where I can express myself. Like in in my childhood, I was not able to express myself. I was not able to say anything. Like there was no platform in school or in family or anywhere. But through Childline, they used to conduct small activities. They used to conduct workshop. In that, I got a platform where I can express myself, which helped me to come out from that trauma and that situation. So yeah. Okay. So, well, it must have taken a lot of courage actually to even reach out to that helpline, because I don't think every state in India has a helpline for children. I'm not sure actually, even if they do, but I know that Goa does, because I used to see that ad whenever I was in Goa. Yeah, the Childline is actually Childline is now everywhere in each city of India, and it is a project of government of India, that is Women and Child Development Ministry, and I think it's in everywhere in India now. That time I think so it's not that much active, like so, but still I got courage. I came to know, as you said, I saw one poster of Childline in one of somewhere, I don't remember exactly, but and I had noted down that number, that is 1098, this helpline number. So I called them. So that's the that I approached them that to help me in this situation. Okay. Okay, yeah, I mean, even I very faintly remember that. So now you also said that you are actually helping children right now who are, one second, just one moment. Guys, please put yourself on mute. Yeah. So you also mentioned to me that you are helping children who are, in the same position as yours. So the juveniles who is in conflict with law. I mean, obviously, nobody is born a criminal. Nobody is born in such a way. I mean, situation puts you through that, and that's how you reach there. But for children to be in that situation, I mean, how do you deal with them, and what is their mindset? How do children reach to that stage? Because I'm sure there are a lot of parents who would like to, I mean, who are watching this right now, or who have children. I mean, this could be a real good guidance to them. Yeah. So Bonita, I started working for juveniles in Pune, that is in year 2014. So यहाँ पे ऐसे था कि पुणे में एक जुनाइल होम है और वहाँ पे एक जुनाइल कोर्ट होता है. If someone commit offense or crime, so पुलिस कस्टडी के बाद उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, that is juvenile court. In legal term it is like juvenile justice court. So उस समय पे स्टूडेंट्स वो जुनाइल्स को वहां पे लाया जाता था, एंड एवरीवन लाइक आस्किंग देम कि तुमने कौन सा क्राइम किया है, व्हाट क्राइम यू हैव डीड, ये क्या है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू. सो देन आई स्टार्टेड लाइक, हैव यू मीन्स तुमको पानी पीना है क्या, या तुम खाना खाए हो क्या, या तुम भूखे हो क्या. सो ये पूछने वाला कोई नहीं रहता है. सी द सिचुएशन जहाँ पे ये ऑफेंस होता है, डिफेंस की सिचुएशन क्या है, लेकिन जब वो क्रिमिनल सिस्टम में आते हैं, जुडिशरी सिस्टम में आते हैं, सो आई फाउंड देर इज अ लैक, देर इज अ गैप, जहाँ पे एक डिग्निटी के साथ हमको उनको डील करना होता है, नॉट लाइक नहीं लाइक एनिमल, और इवन वी हैव टू बिहेव विद एनिमल विद डिग्निटी एज वेल, बट उससे बदतर उनके साथ बर्ताव किया जाता था. सो देन आई रियलाइज कि like talk with them with dignity, and ask them whether they had food, खाना खाए क्या, पानी पिया क्या. And other police officers, other officials in court, they used to ask कि तूने ये क्राइम किया है, तू ऐसा है, तेरी फैमिली वैसी है, तुम्हारा कास्ट ऐसे ही है, like that. So that that changes relation between मेरा और juveniles का, and they started trust on me, and they got someone there they can express themselves कि मेरे ये गलती हुई, like that. So I used to do not exactly clinical counseling, but a guidance where I used to help them in their case, and जहाँ पे
स्टूडेंट्स को, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं जहाँ पे उनके लिए जो मैंने काम किया है, मैनी ऑफ देम आर नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर, मैनी ऑफ देम आर इन पुलिस फोर्सेस। सो ऐसे भी कुछ चेंजेस हैं जहाँ पे मैंने काम किया था जुवेनाइल्स के लिए। और या Okay, but what is the reason that okay, they commit crimes and they reach the court, but how do you how do you understand that somebody is getting into that line? Because या obviously we don't, the parents will not understand where their child is going, especially in India right now, that people either get I mean, they get attracted to a bad company, or you don't know what your child is doing. So how do you keep a, I mean, how would you know that? How would you monitor such things? यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू शेयर वन केस विथ यू जहाँ पे एक स्टूडेंट एक जुनाइल कोर्ट में आया था, जहाँ पे पुलिस का रिपोर्ट हमने देखा था। पुलिस की रिपोर्ट में ये लिखा था कि इसने अपने पिताजी का खून किया है। पिताजी ने खाना बनाया था और चिकन बनाया था। दैट इज द इन रिपोर्ट ऑफ द पुलिस, दैट व्हाट आई एम सेइंग इज चिकन बनाया था और बच्चे ने चिकन मांगा और पिताजी ने नहीं दिया, इसलिए बच्चे को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने पिताजी का खून किया। सो जो फर्स्ट प्रोडक्शन होता है कोर्ट में, दैट वाज द रिपोर्ट ऑफ पुलिस। और देन जुनाइल कोर्ट आस्क्ड मी टू डू अ सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मतलब आई हैव टू डू अ सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सो फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि ये लड़का ऐसे कैसे हो सकता है। लाइक जब वो लड़के को मैंने देखा कि ऐसा बच्चा कैसे हो सकता है कि अपने पिताजी का ही खून कर सकता है, लाइक दैट। सो फिर उसके बाद आई विजिटेड, उनके घर पे मैं गया, आई स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे देन आई रियलाइज कि उसके पिताजी की उसके पिताजी ने 2 शादी किए हैं और दोनों बीवी को मार के उसने भगाया है। और ये जो लड़का है जो ऑफेंस किया है, वो लड़का पहले बीवी का है, मतलब फर्स्ट वाइफ। और उनके घर पे ग्रैनी है जो भीख मांग के इसका पूरा गुजारा करती है। तो उस दिन उस पिताजी ने उसके ग्रैनी को बहुत पीटा पैसों के लिए, और उसी उनको रोकने के लिए डिफेंस में उस लड़के ने अपने पिताजी के सर पे कोई एक लकड़ी से या कुछ चीज से, हथियार से मारा। उस समय पे पिताजी मर गए। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जब केस कोर्ट में प्रेजेंट होता है तो कुछ अलग प्रेजेंट होता है, और जब रियलिटी समझ में आती तो अलग होती है। जैसे तुम्हारा आपका एक सवाल था कि ये कैसे होता है कि ऐसे जुनाइल्स कैसे होते हैं या कैसे हो जाती है। सो मेरे ख्याल से ये है कि फैमिली मेंबर्स को मॉनिटरिंग करना है, लेकिन नॉट एज अ दैट मॉनिटरिंग टोकना का है। समटाइम एक स्पेस देना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो गलत है करेक्ट है ये बताना भी बहुत जरूरी है। उस समय पे ये मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि इसने डिफेंस में उस अपने पिताजी का खून किया है। लेकिन अगर रिकॉर्ड में हम देखेंगे, इट्स नॉट लाइक इन रिकॉर्ड द सिनारियो, द सिचुएशन, द केस इज टोटली डिफरेंट कि बच्चे ने पिताजी का खून किया। दूसरा दूसरा पहलू ये है कि जहाँ पे पियर, बहुत बार ऐसे होता है कि जो पियर होता है और इवन बड़े बड़े क्रिमिनल्स गैंग होते हैं, वो बच्चों का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज उनको पता है कि बच्चों पे कुछ केस नहीं होता। अगर केस भी होता है तो 3 साल तक हो जाएगा, 3 साल तक मिलता है। तो वो क्या करते हैं, इन जुनाइल्स का यूज करते हैं उनके कामों के लिए। लाइक किसी किसी का लूटना है, किसी का मर्डर करना है, किसी को और कुछ करना है, तो उस हिसाब से ये उनका यूज करते हैं। और जब एफआईआर बनता है तो पुलिस फिर उनका नाम पहले लिखती है, बच्चों का, और बाकी सब लोगों का नीचे मतलब सबऑर्डिनेट्स में वो नाम लिखते हैं। तो उस समय पे बच्चे पे वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। ऐसे लगता है कि ही इज लाइक अ मेन एक्यूज ऑफ दैट केस, ऐसे प्रेजेंट होता है। और वो 3 साल के बाद छूट जाता है या और वापस वही इसमें जाता है। सो ये बहुत सरकमटेंसेस बहुत मैटर करते हैं बोनिता। फॉर एग्जाम्पल स्लम में रहने वाला बच्चा डॉक्टर भी बन सकता है, और हाई हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाला बच्चा क्रिमिनल भी बन सकता है। इट डिपेंड्स
कि पेरेंट्स कैसे उनको डील करते हैं। फॉर एग्जांपल और एक केस था जहाँ पे एक एक बच्चे ने अपनी माँ का, नॉट माँ, मौसी का खून किया, मतलब मर्डर किया। और उसका रीजन ये था कि मौसी ने उसको पैसे नहीं दिए थे। तो और उसने बहुत दिनों से मौसी के पैसे चुरा रहा था। जब वो मौसी को पता चला और उसने कन्फ्रंट किया तो उसने उसका मर्डर किया। सो ये अचानक चोरी अचानक नहीं होती है, ये बचपन से हम चुराने लगते हैं, या इट इज लाइक Yeah. क्राइम अचानक नहीं होता है। तो हाँ. हमें ऐसे पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना होता है, बच्चों की गलतियों को बताना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज ऐसे लगता है कि हमको बताने वाला कोई नहीं है। अगर ये महसूस अगर उनको होता है, दैट मीन्स वो आगे क्राइम करेंगे। कुछ सिचुएशन में ऐसे भी होता है बोनिता, दैट इज थर्ड पॉइंट आई एम डिस्कसिंग जूनाइल्स के बारे में, कि मेंटल मेंटल चीजें या इमोशनल चीजें भी ऑल्सो मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केस था जो मैं खुद डील कर रहा था। ही वॉज 16 ईयर ओल्ड बॉय, और उसका क्राइम ये था कि वो छोटी बच्चियां, मतलब छोटी 8 साल की अगर फीमेल्स उसको, गर्ल्स उसको दिखते हैं, उनको ब्लेड से गर्दन उनका कट करता था। और ऐसे उसने 2-3 मर्डर्स किए, और वो केस मेरे पास था। और तब मुझे, आई वॉज वेरी, बहुत डर गया था कि ये केस में कैसे लूं, बिकॉज इसने 2-3 बच्चों का मर्डर किया है, मासूम लड़कियों का मर्डर किया है। और मुझे बहुत गुस्सा है कि ऐसे बच्चों का मुझे नहीं काम करना है, ये क्या है। देन उसको केस, उस पे फिर उसको 3 साल की सजा हो गई। और उस समय पे ये पता चला कि उसका ये है सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसका ऐसे हुआ था कि उसका उसके आंखों के सामने उसकी माँ का मर्डर हुआ था, या कुछ चीज हुई थी, या उसके पिताजी का कुछ तो मर्डर हुआ था। फ्रॉम द, वो लड़का स्लम कम्युनिटी से था। और उस हिसाब से उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, उसको कुछ लड़कियां दिखी तो उनको उनका मर्डर करता था, और उसको मर्डर करने में बहुत खुशी महसूस होती। समथिंग साइकोलॉजिकल टर्म जो था उसके लिए, आई एट प्रेजेंट आई एम नॉट एबल टू टेल दैट वर्ड, बट एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी एक टर्म होती है जहाँ पे जुनाइल्स ऑफेंस होते हैं। जैसे कि एवरीवन नोज दैट निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ था, दैट इज सेक्सुअल अब्यूज केस, रेप केस जहाँ पे हुआ था। और उसमें जो मेन एक्यूज था, ही वाज जुनाइल। Yeah. सो उसके साथ बाकी के लोग भी इन्वॉल्व थे। सो इसमें बहुत सारा बोनिता फैक्टर्स हैं जहाँ पे ये क्राइम्स हो सकते हैं अपने बच्चों से। सो पेरेंट्स को बहुत ध्यान में देना बहुत जरूरी है। और अगर लगता है कि मेरे बच्चों में कुछ कुछ प्रॉब्लम है या कुछ इशू है, हेल्प लेना बहुत जरूरी है। सो वी शुड टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल, जहाँ पे काउंसलिंग हो सकता है या कोचिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये चीजें हैं। यस बोनिता। Yeah, you're right, because I think we sometimes ignore what our children, what the children are doing, considering that they are small, and we just give them a benefit of doubt, saying that ठीक है, बच्चा है and all that. But I think small things, like for example, even when you're stealing money, okay, it could be a very small thing. You're stealing money from your own house, but that is something what will lead to bigger crimes when you are an adult. I think the Yes. parent needs to stop the child there itself and correct the child. Correcting the child is very important, but yes, it is also not that you have to be behind your child 24/7, because the child is Yeah. getting irritated. That is what so how do we in cases like this, how do family or friends or people who are close to children who are growing up right now, how do we monitor them without making them feel that ye zyada ho raha hai, ya not to irritate them, kind of thing? So how do we do something like that? So फर्स्ट ऑफ ऑल डायलॉग्स बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज बहुत बार ये होता है पेरेंट्स ओनली आस्क क्वेश्चंस, तूने ये किया, तुमने वो किया, वहां पे क्यों गया था, ऐसे क्यों गया था, लाइक दैट। लेकिन समटाइम इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू लिसन, आज का दिन कैसे गया, क्या हुआ। आई स्टिल रिमेम्बर माय पेरेंट्स व्हेन दे यूज्ड टू आस्क, तू वहां पे क्यों गया था,
इधर क्यों गया. तो एक्चुअली व्हेन आई वाज किड आई वाज लाइक वेरी इरिटेट एंड आई फ्रैंकली सेइंग मैं 2-3 बार घर छोड़ चुका हूँ. मतलब लाइक आई रैन अवे कि ये क्या चल रहा है, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है. सो आई जस्ट didn't inform parents and just left the home like. So पेरेंट्स को ये बहुत जरूरी होता है कि आप पहले सुनो कि वो क्या कर रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं. बिकॉज डायलॉग्स अगर अच्छे होंगे, अगर मैंने कुछ गलती की है, इफ आई डन एनी मिस्टेक, तो पेरेंट्स को एकदम से वो समझना पड़ेगा कि उसने मिस्टेक किया है तो वो क्यों किया है, क्या रीजन है. सो डायलॉग से होंगे. इट्स वो इंटरव्यू काइंड से नहीं होगा तुमने क्यों किया, ऐसे ही होता है वैसे ही होता है, लाइक दैट. सो कम्युनिकेशन एंड डायलॉग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल हम ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स बहुत कम समय देते हैं बच्चों को. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रात का खाना एटलीस्ट साथ में खाएं, जहाँ पे या फैमिली के साथ खाएं, जहाँ पे सिर्फ आज दिन भर में क्या डिस्कस हुआ है, कैसे हुआ है. दैट विल रियली हेल्प. और हमें पता चलता है बच्चों से कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं. इवन बोनिता, आई वुड लाइक टू हाईलाइट इवन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस, जहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस होते हैं. तो बहुत बार बच्चे बताने के लिए डरते हैं. तो अफ्रेड कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं, क्या बताऊं, लाइक दैट. सो डायलॉग्स और कन्वर्जेशन रेगुलर विथ किड्स help in that situation, what I would like to say. Like, correct. I think it's important for parents to educate their child at a very young age, that they need to tell them, introduce them what is a bad touch and a good touch. In fact, good touch. Yeah. As a child, I myself have been sexually abused so many times. I still remember that, and it is very even with me as well, like in my childhood, I also experienced the same thing. Yeah. Child sexual abuse. It's not only the girl, I think it's also the boy who goes through this. And I have never spoken about this actually before, and this is the first time I'm saying this in front of so many people. But yes, I was also abused sexually when as a child, and I didn't have the courage to tell anybody. I still didn't have the courage, unless now that you've spoken about it. And it does leave a trauma in your mind, and you grow up with that, and you are so petrified, you're so scared about certain things when that person comes near you. And it's even worse if it is a family member. So if that happens to you, then there is nothing what you can do, and you are so scared of telling somebody, because your parent is going to blame you only, and obviously that person, whoever has done that to you, is not going to take ownership of whatever they have done. So in fact, when I have a lot of kids who are growing up in front of me, they are related to my cousins or somebody like that. So I always tell them, especially a girl child, that please don't allow anybody to touch you. If there's somebody who's touching you, make sure, if you don't like the touch, make sure you bring this to your parents' notice. Come and tell me, or don't go and sit on anybody's lap, because you never know, it could be your inner circle who we don't know. In today's world, anything is possible. So that is one thing that I started doing to the my nieces or my nephews, that okay, this is how it is they, they do wonder, that what is she talking. But I still tell them, because they would have this in the back of their mind, that okay, there is somebody has spoken about this. And also I tell the parents that if at all, especially girl children nowadays, people do and they don't see what age and all. It's not necessary it has to be from the family. It can happen anywhere outside also. So it's important to tell the children Yeah. to So recognize what is a bad touch and a good touch. what is good? Yeah. So adding to you, Bonita, when I was in child helpline, we used to conduct a awareness session in the community. So community में क्या होता है कि like they're not that much, means even in the society, people who are staying in society as well, like वो awareness नहीं होता है. So what childline used to do, like making awareness on child sexual abuse, as you said, good touch, bad touch क्या होता है. And even in the schools, इवन मेरे व्हेन आई वाज चाइल्ड लाइन, मेरे पास एक केस भी आया था कि टीचर अब्यूज द किड, दैट इज केजी
मीन्स द मेल स्टूडेंट Okay. जो स्कूल में था, एंड ही जस्ट आई थिंक सो 5 ओल्ड, जिसके साथ टीचर ने अब्यूज किया था. सो पेरेंट्स वर लाइक वेरी कि क्या करे, बिकॉज वो जो टीचर है, वो स्कूल है, वो बहुत नहीं क्या पॉलिटिशियन कनेक्टेड है, बहुत चीजें हैं. पेरेंट्स ने बहुत करेज के साथ मिलके पुलिस में कंप्लेंट किया, लेकिन उनको बहुत तकलीफ हुई. ये सारी चीजें भी करेज के साथ आगे ले जाना भी बहुत जरूरी है. और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें इसीलिए रिपोर्टिंग पीछे रहती है, बिकॉज एक सिस्टम पुलिस सपोर्ट नहीं होता है. अगर कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ है, नाउ इन पुणे आई वाज connected to many NGOs who are working for the child sexual abuse. The child line is there, Muskan is there. So बहुत बार ये दिखता हूँ, इवन इन while working in Pune in Hadapsar, I also deal with the one of the case of child sexual abuse, जहाँ पे स्टेप फादर ने एक 8 साल की लड़की को रेप किया था, जहाँ पे फिर लड़की ने बहुत हिम्मत के साथ चाइल्ड लाइन को बताया कि मुझे केस करना है. बट इवन उसकी मदर उसको ही ये बता रही थी कि जो उसकी खुद की माँ है, वो ये बोल रही कि तू ये झूठ बोल रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है. बट स्टिल दैट वो 8 साल की लड़की अपने करेज के साथ FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन में आई, और चाइल्ड लाइन और बाकी NGOs और हम सब साथ में थे. सो दिस इज ऑल्सो मैटर कि बोनीता की इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे विश्वास नहीं रखते हैं. ये चीजें भी बहुत मैटर है, बिकॉज ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है. Of course, it is. I think parents need to trust their children, and also children don't need to take advantage of the situation, because sometimes children also do. But if the parent is, I mean, they know their child is going through something and some kind of trauma. Uh, we understand a child's body language. We need to focus more on that part, because when the child is growing itself, the child sees a lot of things, especially if they are coming from a broken family. That is something which is very difficult to deal with, because you carry that wound throughout your life, and you enter relationships left, right, and center, and you are cutting somebody else with your wound, which is not fair. People need to understand this, that if at all you have come from a background which has been wounded, you need to heal yourself first. Healing is very important, and healing cannot happen overnight. I think healing happens with self love, it happens with self acceptance, it happens with a lot of kindness to yourself. And for children, especially, we need to give them, anybody who's going through trauma, not only children, even adults. I think we need to be very, very kind to them, because we really don't understand what the person is going through. So talking about trauma, how do you think parents should address the children dealing with trauma, or how can the parents identify that the child is going through something, but the child is obviously not told the parents, because not everybody is expressive. People will, they are scared of telling their parents, because their parents may either, it might backfire on them. They say, like, ye jhoot bol raha hai, ya, it could be anything. So how do parents deal with something like this? सो ऐसे सिचुएशन में अपने बच्चों का बिहेवियर चेक करना बहुत जरूरी है. जो उनका डेली रूटीन होता है वो डिस्टर्ब होता है. लाइक वो खाना नहीं खाएंगे, या जिद करेंगे, बात नहीं सुनेंगे, मतलब उनको मन में गुस्सा रहता है. मतलब अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो एक गुस्सा रहता है. और कोई अगर वो नहीं, वो गुस्सा किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो बहुत चिड़चिड़ होती है, बहुत कुछ होता है. फिर पेरेंट्स को लगता है कि ये यार ऐसे क्या गुस्सा हो रहा है, फिर हम उनको डांटते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कुछ चीजों के लेकर, बॉडी लैंग्वेज देखना बहुत जरूरी है, एक्सप्रेशन देखना बहुत जरूरी है. और उनका रूटीन बदलता है, मतलब जो नहीं खाना खाएंगे या ज्यादा सोएंगे या लाइक दैट, तो इस पे ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है. अगर ऐसे लगता है कि बच्चा ये प्रॉब्लम में है या मुझे कुछ डाउट है, तो आई वुड सजेस्ट कि प्रोफेशनल काउंसलर्स और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या लाइफ कोच जो भी होते हैं प्रोफेशनल्स, उनको अप्रोच करें. बिकॉज बहुत बार
इट इज वेरी डिफिकल्ट होता है कि डील करना, कैसे हम बताएं क्या करें. सो आई थिंक इट इज गुड टू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, जिससे कुछ अच्छा हो जाए. वनिता, आई Yeah, I think it's important to reach out to professionals and rather just speaking to somebody. या. Maybe you will talk to a relative, like you have spoken to your sister or brother. Okay, you do speak, you do take advice, but it's also very, very important to reach out to a professional because only the professional will know how to handle and deal with a situation like this because they have been dealing and obviously it is their job. They will give you the right advice. Maybe a person who's not professional might not give you the right advice for your kid, and there is no shame in reaching out to a therapist, any kind of help, or even for coaches, anything like that, because when you do that you're showing only strength, you're only showing courage, because it's not because you're weak. If you were weak you wouldn't have reached this point. You have to show a lot of strength when you're seeking help. It's very important for people to seek help at the right time, because when you seek help at the right time, especially for children, because since today's entire episode is based on children, I think it's important that when the child is growing, especially what I read in my sessions, that when a child is 7 year old is when the brain starts developing. They start having beliefs. They start having things which are there in their mind for the rest of their life. So that is the age where we need to do the right things, set the right examples. Okay, you don't have to be perfect. As parents nobody is perfect, but all you can do is try your best to give. I mean, since you brought the child in this world, obviously it is your responsibility and your duty as a parent to make sure that your child is grown in healthy environment, not only physically but also mentally. I think it's very, very important. सो आई ऑल्सो वुड लाइक टू ऐड, मोनिका, कि बहुत बार जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. इट इज पॉसिबल हमारा मन, हमारा दिमाग भी बीमार पड़ता है. दैट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, टेंशन, ट्रॉमा. तो उसको भी एक किसी की जरूरत होती है. दैट इज अ प्रोफेशनल काउंसलर्स, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं. और इंडिया में खास करके ये चीजें मानी जाती है, जो कोई मेंटल होता है, आई एम वेरी सॉरी यूजिंग दैट वर्ड, बट इट इज कॉमन वर्ड दैट इज यूजिंग इन इंडिया. मेंटल होता है वही साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जो मेंटल होता है वही साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है. मेरा बच्चा थोड़ी पागल है, मैं उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाऊं, लाइक दैट. सो वो अप्रोच भी चेंज करना बहुत जरूरी है. कोई पागल होता है तो ही नहीं जाता है, हर किसी को जाना पड़ता है. जैसे हम खुद, हमारा मन, हमारे बॉडी जैसे बीमार पड़ती है, वैसे हमारा मन भी बीमार पड़ सकता है. और उस मन को अच्छा करने के लिए वी शुड ऑलवेज अप्रोच अ प्रोफेशनल. Correct. I think we ignore our mental health so many times. We are like, no, leave it. I'll just maybe feel better in some time. But when you reach a point where you cannot handle your anxiety, वो एक वक्त आता है लाइफ में कि तुम नहीं कर सकते हो, कि नहीं, this is like this is it. इसके नीचे तुम जा ही नहीं सकते हो. I think people don't need to reach that point. I mean, I reached that point. That's why I started seeking therapy. But if I would have seek therapy much in my earlier days, I think things would have been different. Not that I have any regrets right now, but I said for children itself, when they are growing, it's not that okay because he's a child, like like you said, मेरा बच्चा थोड़ी पागल है कि मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ. I mean, but then why do you take your child to a doctor if he has fever? Just give him one tablet or give her a tablet and they'll be fine. You still take care of their physical health. Same way, mental health is very important, whether it's a child or an adult. But if it has been taken care at that stage where the child is growing, they would not grow with any complexities as an adult. It gets healed at that point of time. So about healing. So what was that turning point in your life which where you decide like, okay, I am healed now. I mean, healing is a very messy affair, but how did you realize that? So in my life, there was one thing that I didn't share with anyone, but I shared it to my. It's about my child sexual related things that I didn't open up with anyone, but I openly मैंने मेरे एक
दोस्त है, मेरे दो दोस्त हैं दैट इज इन पुणे, उनके सामने मैंने चीजें बताई, दैट टाइम आई फील वेरी नाइस, वेरी रिलीव्ड, लाइक बहुत हल्का महसूस हुआ लाइक दैट। और माय टर्निंग पॉइंट की उसके बाद देन यही मेरा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मैं को, और बहुत बोनीता बहुत बार कैसे होता है कि अ, अपने किसी एक व्यक्ति को अगर बताए कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, जो भी मुझे अच्छा लगे या जिससे मुझ पे ट्रस्ट है, उसको बताए तो काफी है। लेकिन बहुत बार ऐसे भी फ्रेंड्स मिलते हैं जो बहुत बार इंसिस्ट करते हैं, हमें बताओ लाइक दैट, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो उस समय पे आई ऑलवेज फेल्ट कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स, Right. बट आई एम रेडी टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जहाँ पे एक ट्रस्ट होता है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। सो वहां पे मैं बताऊंगा। तो उस समय पे मैंने बताया मेरे लाइफ के बारे में ओपनली विथ माय टू फ्रेंड्स, और उस दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ वेयर जहाँ पे आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय वर्क विदाउट एनी प्रेशर, और एक बहुत हल्का, अदरवाइज एक डर रहता है मन में हाँ. और कुछ चीजें हमने नहीं एक्सप्रेस की। यस। Correct. That is why this platform is a voice out, because you express to inspire. And honestly, in the first season, all when I took a feedback from all my speakers once the season was over, everybody told me that how empowered they felt after speaking about something which which takes a lot of mental strength and courage to speak about. Because when you when you don't speak about issues, you are you are suppressing it in your head. But when you speak about something, you need to speak in front of the right crowd, not just to anybody, like you said, who are more interested in knowing for gossip reasons that तुम्हारे life में क्या हो रहा है, why did this happen, why you're like this, why you're not married, why you're single, or things like that. But when you open up in front of the right people, which you yourself will know, like हाँ ठीक है, ये मेरा ये मेरा दोस्त है, or whatsoever reason, I think it you feel empowered and you feel so relieved. Because one of my speakers, the last speaker of the previous season, Natasha, she accepted about her affair, which is a big thing, because she was married at that time, and she spoke about her affair, which is not easy. Nobody is going to speak about having an extramarital affair when they are married. But yes, she spoke about it, and she told me that how relieved she was when she spoke about it. And I admire her for taking that much of strength. Okay, so before we wind up today, is there anybody who would like to ask any questions to Samir or myself, or if you all want to say something to us, please switch on your mic or and camera both, and you all can say something. Okay, I guess we've answered most of the questions. So, Samir, thank you so much for voicing out. I hope you always shine bright. So, before we close today, is there anything that you would like to say, whatever you have in your heart and mind? या थैंक यू बोनीता। मैं मुझे यही कहना था कि लाइक सो मेरे मन में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। बहुत बार बहुत लोग अच्छे भी कमेंट्स करते हैं, बहुत लोग गलत कमेंट्स भी करते हैं, अच्छी चीजें भी करते हैं, गलत चीजें भी करते हैं। तो मैंने लाइफ में एक चीज सीखा है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है। सो जितना समय अपने पास है उसको एंजॉय करिए, और लोग लाइफ में आते जाते रहेंगे। और और बुरे लोग और अच्छे लोग, ये दोनों लोग हमारे लाइफ के लिए उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। बुरे लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आगे जाके हम बुरे लोगों से अलर्ट रह सकते हैं। अच्छे लोगों से हमें अच्छे इंसान कैसे बनना है ये हम सीख सकते हैं। सो इट्स द लाइफ जैसे भी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और एक बार आप एक्सेप्ट करेंगे, डेफिनेटली आप अपने लाइफ को और खुद को बहुत लव करेंगे, और एक अच्छी ब्यूटीफुल जिंदगी जी सकते हैं। दैट्स इट। Thank you so much. थैंक यू। We have comments from Pooja and Dipali who said thank you.
It was an informative session. Dipali says, got so many insights. Thank you. Thank you so much, Pooja and Dipali, for your comments. And thank you guys for joining in. I hope you have a I think lovely. Tanmay has. Sorry. Sorry. I felt Tanmay has raised hand. No, he didn't raise the hand. Tanmay, do you want to say something? Even I seen a hand, I think. So maybe he. Yes, ma'am. Is a very helpful and knowledgeable. Yes, for me, ma'am, and all of. Okay. Thank you so Thank much, you. Tanmay. I hope you guys have a wonderful weekend. Please stay safe, wear your mask, and stay beautiful. Thank you again. Thank you, Bonita. Thank you, everyone.